Hello students, welcome in the chemistry class. Aldehydes and ketones is the topic for today. और इस टॉपिक में हम इससे पहले दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एज द एडिशन रिएक्शंस. And in continuation to the last videos, today we are discussing about the further chemical properties of aldehydes and ketones, and these are oxidation reaction and reduction of aldehydes and ketones followed by halogenation. Oxidation of aldehydes and ketones. Aldehyde ketones are having the same group carbonyl. In case of aldehydes, there is CH bond which can be oxidized easily. ये group easily COH में convert हो सकता है. So aldehydes are easily oxidized. In ketones, there are carbon-carbon bond. So we have to split this carbon-carbon bond. So carbon-carbon bond cannot be oxidized easily. इनका ऑक्सीडेशन इतना आसान नहीं है. तो इसके लिए हम क्वेश्चन ले सकते हैं. हमारे सामने क्वेश्चन आ सकता है कि एल्डिहाइड्स आर more easily oxidized than ketones. क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड्स में CH बॉन्ड है जो कि आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है. कीटोन्स में ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड जरूरी है और जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है. तो ये आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं and by mild oxidizing agent. These are oxidized by strong oxidizing agents. So aldehydes are easily oxidized by mild oxidizing agent. Examples are number 1, oxidation by Tollens reagent. Tollens reagent is ammoniacal silver nitrate. सिल्वर नाइट्रेट में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, एक व्हाइट पीपीटी आएगा और एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर वो व्हाइट पीपीटी कंप्लीटली रिजॉल्व होगा एंड दैट क्लियर सॉल्यूशन इज नोन एज द टॉलेंस reagent. So during the preparation of Tollens reagent, सिल्वर नाइट्रेट जब हम उसमें एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो बनेगा Ag2O प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O. This Ag2O dissolved in excess of ammonium hydroxide and forms a complex It is the Tollens reagent. It reacts with aldehyde and oxidizes it to RCOOH plus silver metal is deposited along with ammonia and H2O.
So due to deposition of this silver metal, the glass tube जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब में ये सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाता है और वो सिल्वर की तरह चमकने लगती है और इसी को हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। दिस टेस्ट इज नोन एज टॉलेंस टेस्ट, जो कि देता है सिल्वर मिरर विद एल्डिहाइड्स। ये रिएक्शन कीटोन्स में नहीं हुई। नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन बाय Fehling solution। What is Fehling solution? It is composed of two parts, Fehling A and Fehling B. It is the aqueous copper sulfate solution, and Fehling B is alkaline solution of sodium potassium tartrate, जिसको हम बोलते हैं रोसेल सॉल्ट। सो Fehling A एंड Fehling B, इसको हम इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे। Fehling A प्लस Fehling B, and the mixture is Fehling solution. In short, we can say it is alkaline solution of sodium potassium tartrate with copper salt solution. So aldehydes with Fehling solution give red PPT of Cu2O, cuprous oxide. Reactions can be this salt, cuprous oxide, is of red color, and aldehydes with Fehling solution give red brown PPT, and that is the confirmation test for aldehydes, and this test is not given by ketones. Test number 3 is Benedict test. And that is the alkaline solution of copper plus 2 salt with sodium citrate, and aldehydes RCHO, these with Benedict solution give a red PPT of Cu2O, and the reactions are RCHO, any aldehyde, copper plus 2 OH minus, and it is oxidized to carboxylic acid. Fourth test is the Schiff test, and that is the rhodaniline hydrochloride, the pink color of which is decolorized by passing sulfur dioxide gas. Aldehydes with Schiff reagent restore pink color of it. तो ये जो Schiff reagents हैं, that is rhodaniline हाइड्रोक्लोराइड, जो कि होता है पिंक कलर में,
यहां पर हम पास करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सो ये कलरलेस हो जाता है और यही कहलाता है शिफ्ट रिएजेंट। एल्डिहाइड कीटोन्स में शिफ्ट रिएजेंट ऐड करने पर शिफ्ट रिएजेंट का पिंक कलर फिर से रीअपियर हो जाता है और यही है कंफर्मेशन फॉर एल्डिहाइड्स। ब्रोमीन वाटर टेस्ट और रिएक्शन विद hypohalides. So aldehydes are oxidized easily by bromine water and form carboxylic acid, and brown color disappears. All these reactions are not given by ketones. तो इन 5 रिएक्शंस के बेस पर हम एल्डिहाइड कीटोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Now oxidation of the ketones, and ketones are not easily oxidized as compared to aldehydes, और इनका जो ऑक्सीडेशन है कीटोन्स का, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा ही हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स like acidified potassium dichromate. So these are oxidized by this strong medium and at one point bond is splitted, so it will give HCOH plus CH3 COOH. Now this HCOH is not stable, so easily converts into CO plus H2O. अब ये जो स्प्लिटिंग है इस साइड से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, और अनसिमेट्रिकल कीटोन ऑक्सीडाइज करना होता है तो यहां पर एक रूल फॉलो होता है, पोपोफ रूल, जिसके अकॉर्डिंगली splitting takes place in such a way that CO group remains with the smaller group, ketonic group remains with the smaller group, और splitting होगी इस जगह से और ये बनेगा CH3COOH plus CH3COOH. Next type of reactions are reduction reactions. Number 1, reduction to alcohols. So aldehydes and ketones are CHO or R2CO. Aldehyde ketones, these are reduced to alcohols. Aldehydes give primary alcohol and ketones form secondary alcohol. और ये रिएक्शन हो गई रिएक्शन कैटालिटिक, हाइड्रोजन विद निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, और बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड. In case of catalytic reduction, aldehydes are reduced to primary alcohol. For example, CH3CHO, it is reduced to ethyl alcohol. It is acetaldehyde, it is ethyl alcohol. Ketones are reduced to secondary alcohol.
और रिएक्शन कैसे होगी? CH3, it is acetone, for example, when it is reduced in presence of hydrogen, platinum, palladium, lithium aluminium hydride or NaBH4, any one. So it is reduced to alcohol compound CHOH, isopropyl alcohol. So aldehydes give primary alcohol and ketones give secondary alcohol. Now there is difference in reactivity of lithium aluminum hydride and NaBH4. Lithium aluminum hydride reduces aldehydes, ketones, carboxylic acids, acid derivatives, cyanides and amides. But NaBH4, it has reaction only on aldehydes, ketone and acid halides. But when we have to compare the reduction of unsaturated aldehydes, it's different type of reactions with lithium aluminum hydride and NaBH4. Lithium aluminum hydride is strong reducing agent, so it reduces the multiple bond as well as aldehyde group and compound is. But in case of NaBH4, it will give unsaturated alcohol. So that is the difference in the reactivity of the lithium aluminum hydride and NaBH4. In case of compound like at beta carbon, benzene ring is present, so both compounds reduce the unsaturated compound lithium aluminum hydride CH2OH. It is known as acraldehyde or acrolein, and with it is crotonaldehyde. When it is reduced with NaBH4, we get alpha beta unsaturated alcohol. Alpha beta unsaturated alcohol. तो अनसैचुरेशन के केस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो हमें सैचुरेटेड अल्कोहल मिलेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ मिलेगा हमें अनसैचुरेटेड अल्कोहल. Second type of reduction reactions are reduction to alkanes. Number 1, क्लीमेंशन रिएक्शन. जिस रिएक्शन में ये नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है. इस रिएक्शन में अल्डिहाइड्स और कीटोन्स these are reduced by means of zinc Hg and concentrated HCl. That is the
special catalyst for Clemmensen reaction, or it may also be named as reduction, Clemmensen reduction. So aldehydes and ketones, these form are CH3 alkane. Aldehyde group is converted into alkane group and water molecule. So formaldehyde will be converted into methane, acetaldehyde into ethane, and acetone is converted into propane. That is Clemmensen reduction. Number 2 reaction is Wolff-Kishner reduction. और क्या है ये वॉल्फ रिएक्शन? इन दिस रिएक्शन aldehyde or ketones are treated with hydrazine. It is hydrazine in presence of potassium hydroxide glycol, so gives our intermediate product, which on heating at 453 to 473 Kelvin gives our CH3 plus nitrogen. So this CHO group is converted into CH3 group. So that is known as Wolff-Kishner reduction. Reduction by HI and red phosphorus, और ये कहलाता है यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट. इसमें हम याद रख सकते हैं. सो इट कन्वर्ट्स एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल्स, aldehyde ketones, carboxylic acids, esters, all in alkane. तो आपको कभी भी एल्केन बनाना हो किसी भी कंपाउंड से HI रेड फास्फोरस इजीली यूज कर सकते हैं. एंड रिएक्शन इज एल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड. It is acetaldehyde, one example of aldehyde. So when it is treated with HI in presence of red phosphorus, it gives CH3 plus iodine plus H2. So that is the reduction of aldehyde group to alkane. In the same way, with HI red phosphorus gives CH3, CH2, CH3 alkane. Next chemical properties of aldehyde ketones is the halogenation. Alpha hydrogen, which is active in nature. In aldehyde ketones, alpha hydrogen is active. क्यों एक्टिव है? aldehyde or ketone after release of H plus, it forms minus after release of H plus, and this compound is resonance stabilized. It gives CH2 double bond CH
O minus. So due to resonance stabilization, this alpha H is easily released, and that is known as active alpha hydrogen. So aldehydes and ketones having alpha hydrogen, when treated with halogen chlorine in presence of acidic or basic medium OH minus or H plus, give alpha halogenated aldehydes and ketones. In presence of basic medium, all the alpha hydrogen can be replaced by halogens. But in acidic medium, only one H, alpha H is replaced by the halogen. CH3CHO, when it is treated with chlorine in presence of OH medium, it gives CCl3CHO plus HCl. All the hydrogens are replaced, but with acidic medium, only one hydrogen is replaced by halogen. This reaction in basic medium is used as the iodoform test. Iodoform test compounds aldehydes and ketones. क्या है ये iodoform test? CHI3 is iodoform. So aldehyde and ketones with iodine and NaOH give yellow PPT of CHI3. So formaldehyde C6H5CHO, CH3CH2CHO, these give no reaction, no iodoform test. और ये है basic point for the distinction between the aldehydes or ketones, where these differ with respect to CH3CO group. Reaction between the two can be represented as this carbon is converted into iodoform CHI3, and remaining carbon is converted into sodium salt of carboxylic acid plus NaI and H2O. So that is the main compound जिसका नाम है येलो कलर होगा, और ये है iodoform. So in the same way, CH3COCH3, it is also having this CH3CO group, और रिएक्शन करने पर ये देगा कंपाउंड CHI3 प्लस 2 कार्बन एसिड सोडियम आयोडाइड प्लस H2O. So it is the iodoform test. इसी बेस पर हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं HCHO CH3CHO में iodoform test with iodine and sodium hydroxide or sodium carbonate. Here no reaction. It gives yellow PPT of CHI3. अब कौन कौन से कंपाउंड रिएक्शन में देंगे? C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, ये रिएक्शन नहीं देगा. एसीटोन ये रिएक्शन दे सकता है, और
ऐसे सभी कीटोन्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप 2 नंबर पॉइंट पर है, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड पेंटेनोन 2। पेंटेनोन 2 भी रिएक्शन दे सकता है यहाँ पर, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, नो iodoform test. So that is all for today. Thank you.